A very good morning and welcome back. So last time we were discussing about dot conventions and mutually coupled circuit. In particular, it was about mutual inductances and deciding how mutual inductance will affect the voltage across the coils. This is a typical example in which what you see is a magnetic core. So this is a magnetic core and three coils. You see L1, L2 and L3 are wounded on this magnetic coil. And for this particular circuit, you have to do a few things. Number one, you have to determine dot conventions or positions of dot. Fine. And after you have determined position of dot, you have to write the mesh equations for this particular circuit. Done. And when you are writing mesh equations, what you need to do is you have to specify the voltage across L1 completely. It means it should have the term because of self inductance and it should also have the term because of mutual inductances. Done. But the main task is how to determine the position of dots. यहाँ तो coil दिया है, एक actual real circuit दिया है. For that, what you have to recall is the corkscrew rule. I hope you remember in your 10th class you did corkscrew rule. If you know the direction of how current is flowing through the coil, you can determine what would be the direction of the magnetic flux. Okay. So you see that I can consider this to be a solenoid. A coil है हमारे पास और linear coil है. So this is the direction of flux. If you follow the direction of my finger, so this is the direction of the electric current. I just have to do this. So now this is the direction of electric current over here. You see, इस coil के लिए the direction of electric current is like this. And if the direction of electric current is like this, then the thumb denotes the position of magnetic flux. Therefore, the position of magnetic flux or the magnetic flux should be in this direction. So for coil 1, the magnetic flux should have direction which is this. It is in this direction. Similarly for coil 2, you see, because in coil 2 the fingers are to go in this direction, therefore the direction of flux will be like this. So this is if it is coil 3, then the direction of flux across coil 3 will be this. Similarly, what would be the direction across this particular coil, which is L2? You see that it is not like this, the current is like this coming out, huh? So the direction of flux is going to be from here to here. So let me call this as phi 1, the direction of flux. Coil 2 has phi 2 and coil 3 has phi 3. Now you see, if I consider both coil 1 and coil 3, they are in clockwise direction. Both are in clockwise direction. तो यहां से आप देखें, so this is a digression from what we are actually doing. So we have one coil here. This is our core, magnetic core, and you have a coil here which is having direction like this, and you have another core which is having direction like this. Okay, so here the direction is this. अब हम कह रहे हैं कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उनका डायरेक्शन ये होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर राइट हैंड थंब रूल. और इसमें से जो डायरेक्शंस या फ्लक्स निकलती है उनका डायरेक्शन ये है. Now if these two are coupled, you see, then the coupled flux will also have the same direction as of these two coil. इसमें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका भी डायरेक्शन यही होगा, और इसमें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका भी डायरेक्शन यही होगा. That's why these two coil will have dot placed at same position. Same position मतलब अगर इसका एंटरिंग पे डॉट लगाएंगे तो इसके भी एंटरिंग पे लगाना होगा, अगर इसके लीविंग पे डॉट लगाएंगे तो इसके भी लीविंग पे लगाना होगा. Fine. Point number one. Point number two is, because you see that this flux is opposing the flux phi 3 and phi 1. So this particular coil should have dot placed at opposite end as that of phi 1 and phi 2 or L1 and phi 1 and phi 3 or L1 and L3. Okay.
तो जब आप डॉट कन्वेंशंस लगाएंगे तो phi 2 पर जहां आप डॉट लगाएंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट एंड पे होगा उसके कंपैरिजन में जहां phi 1 और phi 3 पर डॉट लगाएंगे। तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा आसान किया जा सकता है, बिकॉज अभी तक हमने मैग्नेटिक कोर का क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ा नहीं है, और सर्किट थ्योरी में उसकी कोई ज्यादा अभी अहमियत नहीं है। पावर लॉसेस में तो होती है लेकिन अभी कोई अहमियत हमारे पास नहीं है मैश एनालिसिस में। सो आई कैन जस्ट सिंपली रीड्रॉ दिस डायग्राम एज दिस। यू सी, आई हैव अ वोल्टेज सोर्स, अ कॉइल, यहां देखें एक कॉइल आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, आई हैव अ वोल्टेज सोर्स, फिर एक कॉइल है, ये कॉइल आ गई। आफ्टर दैट कॉइल आई हैव अ कैपेसिटेंस कनेक्टेड, डन। आफ्टर द कैपेसिटेंस आई हैव अनदर कॉइल L2। After that coil I have a resistance connected, no problem. Then through after the resistance I have another coil L3. So all are in series, whether I have made it like this या मैंने इसको ट्विस्ट किया है नहीं किया है, that hardly matters for my circuit. Okay, it matters when the flux linkage was concerned, but क्योंकि अब हम केवल equations लिखेंगे then it hardly matters. This is L1, this is C, this is L2, this is R, and this is L3। और यहां जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है इट इज एसी सोर्स, तो हम इसे स्मॉल v एंगल 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म अभी से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंगल 0 रिप्रेजेंट फेज। यू विल गेट टू नो व्हेन यू वी डू रेजोनेंस एनालिसिस जहां फेज शिफ्ट दिखने को मिलता है। खैर, अब इस सर्किट से हमने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया है, फाइन। एज आई टोल्ड यू थ्रू दिस फ्लक्स लिंकेज एनालिसिस दैट जहां पर phi 1 का और phi 3 का डॉट होगा दो शुड हैव सेम एंड। तो अगर मान लीजिए मैं phi 1 L1 के लिए डॉट रख रहा हूं विच वाज फॉर phi 1, वो मैं स्टार्टिंग एंड या एंटरिंग एंड पे रख रहा हूं, तो L3 का भी मुझे डॉट एंटरिंग एंड पे ही रखना पड़ेगा, फाइन। और L2 का इन दोनों के ऑपोजिट यानी लीविंग एंड पे रखना होगा। तो नाउ आई हैव रिटन ऑल द डॉट्स एज वेल, फाइन। सो अब पूरा सर्किट है हमारे पास, बट नाउ यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक इन इफेक्ट। जब आप L1 कंसीडर करेंगे तो आपको L12 और L13 दोनों को, या आप 1 लिखते हैं तो यू राइट इट लाइक L21 एंड L31 दोनों लिखने पड़ेंगे। Similarly, when you would write for L2, you have to write for L12 and 32। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस में डबल इंडिसेस आती है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड बिकॉज ऑफ 3, यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग। म्यूचुअल इंडक्टेंस in 2 because of 1 because of 3, mutual inductance in 3 because of 1 because of 2, that is to be considered। Okay, so first of all you see that this is a simple circuit. How many meshes are there? How many meshes? Only one mesh, so we will have only one mesh equation। mesh equation लिख लेते हैं, but remember that because we have inductances and capacitances involved, you have to take in account the reactances। एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो अब हम केवल L नहीं लिख सकते, आप जानते हैं इंपीडेंस ट्रांसफॉर्म करते में L के साथ एक LS आ जाता है और C के साथ 1/CS आ जाता है, where S is j omega। तो I can simply write that my V0 has to be equals to voltage across L1 plus voltage across capacitance plus voltage across L2 plus voltage across resistance plus voltage across L3। Okay, now remember that voltage across L1 would be what? ILS. This is what we did in our impedance transform approach where S was j omega. So I can simply replace S by j omega and directly write that V0 has to be equals to, because I is the only current that is flowing, so I can write it as I। LS की जगह मैं लिख देता हूं j omega L1। ओके, j omega L1 प्लस VC। अब VC के लिए क्या करेंगे? I would be there, बट जो XC होता है उसकी वैल्यू 1/j omega C होती है, फाइन। प्लस VL2 is going to be I j omega L2 plus VR is nothing but just IR plus VL3 is I j omega L3। But
Is this equation complete? No. Why? Because in VL1, we have taken the effect of self-inductance, but not of mutual inductances. This is the reason that this equation is yet not complete. तो अब VL1 होगा क्या, completely क्या होगा, वो हमें लिखना चाहिए. Okay? ऐसे ही VL2 completely क्या होगा, VL3 what it would be completely, वो हमें लिखना होगा. तो this equation is incomplete as of now. Okay, and we have to write the complete equation. Let us do that. So let me write first for VL1. Okay, so for VL1 you need to write three terms. तीन terms लिखने होंगे आपको. सबसे पहला होगा the term which is because of the self inductance, which is I j omega. Okay, I j omega L1. Then I have to write the terms because of mutual inductances. Okay, I would have something like M21, the voltage in 1 because of mutual inductance 2. So let me keep it as 2 1 only. J omega into I, and I also have M31 j omega into I. See, you can choose these notations like 1 3 or 3 1, but आप mention कर दें कि which type of notations are you using. Fine. अब देखें, I have not put in sign in place of anything. अब आप इस सर्किट पे आ जाएं. जो हमारे V1 का साइन है या VL1 का साइन है वो ये होना चाहिए, इसका ये, इसका ये, इसका साइन ये, इसका साइन ये होना चाहिए, बिकॉज ये सब पैसिव एलिमेंट्स हैं और हमने देखे ये इसे राइट हैंड साइड पे लिखा है. तो फाइन, वी नो समथिंग. हाउ टू डिसाइड साइन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस? बाय पैसिव कन्वेंशन. By passive convention, it requires that the sign in self-inductance should be this, because the direction of flow of current is from this end, from dotted end to undotted end. या फिर आप देखें, so it would be a positive over here. No problem. Now you see, अब हमें M21 डिसाइड करना है. अब M21 डिसाइड करने के लिए you have to go to coil 2. ये रही coil 2. Coil 2 में आप देखें, in from coil 2, the current is leaving the dotted end. If the current is leaving the dotted end, तो coil L1 पे आके the sign should be negative for mutual inductance. Okay? At the dotted end. तो अगर negative हो गया at the dotted end, तो undotted end पे positive हो जाएगा. But this opposes the actual V1 or the polarity of actual V1, and that's why we should place a negative sign here. Okay? वैसे भी आप जानते हैं कि अगर opposite end पे dots लग जाएं तो negative end हो जाता है. This is what we did in our last class. अब आ जाएं, what would be the sign for M31? We see that in coil 3 the current is entering. If in coil 3 the current is entering, that at coil 1 the dotted end should be positive and the undotted should be negative, which agrees to our passive conventions of the V1 polarity. So it would be a positive sign. तो जब आप इस इक्वेशन में VL1 पुट करेंगे तो विल नॉट ओनली राइट सेल्फ इंडक्टेंस टर्म बट विल आल्सो राइट दीस टू टर्म्स. ओके, नाउ लेट मी राइट फॉर VL2. So in VL2 you will have a self inductance term, a mutual inductance term which would be I j omega M 1 2 M 3 2 j omega and I. Okay, ये I और j omega multiplicative है इसलिए I can write it आगे पीछे, but anyways I should write it like I j omega M1 I j omega M21 like this. Okay. Now you see about L2, what is the passive convention going to be? The passive convention requires it to be like this, and because it follows the polarity there would be a positive sign. What about M12? अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. अगर हम M12 को देखें तो 1 को देखना होगा. ओके, तो 1 को देखना होगा. 1 में देखें, the current is entering the dotted end. If the current is entering the dotted end, तो 2 के dotted end should be positive. But ये
हमारे कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए, है ना। एंड अगर आप 3 और 2 को देखें, लेट अस डू लाइक दिस, तो यहाँ पे भी इट इज एंटरिंग। अब एंटरिंग है इन 3, तो 2 पर अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की कोशिश करें तो डॉटेड एंड शुड बी पॉजिटिव व्हिच डज नॉट फॉलो द पैसिव कन्वेंशन, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन, VL3। इसका आएगा I j ओमेगा L3 I j ओमेगा M13 I j ओमेगा M23। ओके, आई कैन राइट लाइक दिस। तो पैसिव कन्वेंशन से देखें तो यहां पर पैसिव कन्वेंशन वुड रिक्वायर द साइंस टू बी लाइक दिस, तो इसलिए ये हो गया पॉजिटिव। अब 1 3 में आपको चेक करना है कि क्या साइन होगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों में ही डॉटेड एंड एंटरिंग करंट वाले पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए। और यहां देखें L2 और L3 में डॉटेड एंड ऑपोजिट एंड पर हैं, या डॉट ऑपोजिट एंड पर लगाए, L2 में लीविंग डायरेक्शन पे, L3 में एंटरिंग डायरेक्शन पे, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, तो इट विल नॉट फॉलो द कन्वेंशन, देयरफॉर यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर कॉइल 1, this is for coil 2, and this is for coil 3, and you can now actually write all these values in this particular equation। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स ये हुए, प्लस 6 टर्म्स और आ जाएंगे बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आप, क्योंकि M12 और 21 सेम मानते हैं हम, तो दैट कैन बी रिप्लेस्ड। 32 और 31 सेम मानते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। और 13 और 31 सेम मानते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। तो एटलीस्ट 3 टर्म्स तो एक्स्ट्रा आएंगे ही आएंगे। ओके, so that's how you decide when dot conventions are not given. You can actually decide decide to place dot or position of dot just by analyzing the direction of current in coil, because that gives you the direction of flux। अब एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो डॉट भी आप ऑपोजिट एंड पे लगा देंगे। एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रिमेंबर that if two coils are given placed in the vicinity of each other, then it becomes mandatory to include the values of mutual inductance and not only just go away with or do away with the self inductances। Remember this thing। But if only one coil is given in the circuit, जैसा कि हम आज तक के सर्किट्स में करते आ रहे थे, और अगर किया भी होगा कि 2 कॉइल रख ली होंगी तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं देखा, बट अब से आगे अगर आपको बता दिया जाए कि कॉइल म्यूचुअली कपल्ड हैं, then you have to include mutual inductances। okay, so this is one important example जिससे ये चीज क्लियर होती है कि अब से आगे जो एनालिसिस होगी या मैश इक्वेशंस, मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस लगाएंगे, उसमें हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो रोल है वो भी स्पेसिफाई करना ही होगा। फाइन, दिस इज इट। जो म्यूचुअली कपल्ड सर्किट्स में या सर्किट्स में जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑन ट्रांसफॉर्मर्स, so that we can take in the next part of this lecture। Thank you so much।